but anyway, I believe you will watch it back again. And इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थर्ड वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं. Okay, anyway, thanks to remind me. Okay, इस कैंडल को, first of all, when you bring the cursor to any particular candle, so it will display you already. This is the highest price, this is the lowest price. Here you can see this is open and this is closed. And this is very basic. So the point which I wanted to let you know was कि see इसकी importance कितनी है कि this was 2077 the price. Okay, after a couple of years nobody knew कि ये इस वीक में इस प्राइस से बाउंस बैक होगी. प्राइसेस तो कितनी बाउंस बैक हुई हैं, जस्ट इमेजिन 2000 almost 71 was high, और उसी वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है here 1986. This is too much, like almost 85 points. So you got my point ke why it has behaved normally, because in the past we already put a line here that this was significant level. ये लाइन आपने जैसे ही मार्केट ने ये हाई बनाया उससे नेक्स्ट वीक हमने ये लगा दी थी कि जी this is the lifetime high, all time high. It means this is very important level. Means if in future market came here or market break this level, in any case we can see a normal move. अब यहाँ break तो नहीं किया market ने, but it come, you know, it almost touches this line, very close to it. और यहाँ से देखें कितनी डाउन आके मूव हुई है, क्लोज हुई है. आप नॉर्मल कैंडल्स देखें, ओपनिंग क्लोजिंग साथ साथ होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें यू कैन क्लियरली इमेजिन. व्हाट माय पॉइंट, ये पॉइंट किसी इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी हो कि इसकी सिग्निफिकेंस को हमने कैसे देखना है. ओके, प्रोसीड. I deleted it again. Okay. ये लाइन डिलीट दो दफा इसलिए हुई है, यू कैन सी राइट पे ये चेक्ड है, तो इसको डबल क्लिक करें. नाउ दिस विल बी परमानेंटली सेव्ड ऑन योर चार्ट्स. अदरवाइज आप दूसरी लाइन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यू मेक अ लाइन हियर व्हाटएवर, और आप उसको फिर डिलीट का प्रेस करेंगे तो सिर्फ यही लाइन अब डिलीट हुई है. और अगर आपने इसको इस तरह चेक रखा होगा तो ये भी डिलीट हो जाती साथ. सो वी हैव टू कीप इट हियर on weekly charts. Let's move a bit lower to find couple of more lines like this, and then we switch back to our original topic. Okay, so we are discussing significant level, remember. इसके बाद आप let's watch and observe what other points could be based upon this move. Forget this part right now. Say अब यहाँ पे आप देखें ये एक लेवल है, मार्केट पास्ट में जब इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आई, it made a high here, and then you see this candle. This is another type of emotional candle. Market extraordinary sell हुई इस पॉइंट से, right? So it means this point is also of importance. It cannot be exact all the time, but so let's make a line here and examine. In first place आपने just line लगाते जाना है, उसको scroll back करके check करना है, और उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट लेवल नहीं लग रहा आपको ज्यादा, उसको कलर चेंज कर लें फॉर योर रिमेम्बरेंस. मे बी आप कहेंगे ओके दिस ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन रेड और व्हाटएवर. ये आपने कोई हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन पे. ओके, नाउ वी पुट दिस लाइन वाई. यू सी दिस, as we told, the filled bodies, filled body के top और bottom ये ज़्यादा मैटर करते हैं, and the closing prices are the most important prices. अब ये देखें कि इस पॉइंट के नज़दीक closing is well below, filled body is top. So we have these three locations. We are looking for important locations which give significant. Even आप ये 3-4 वीक्स की बेस पे भी ये लाइन लगा सकते थे.
After that, market start moving down. इस एरिया को मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, then start moving down. You watch this. Then again, after a couple of months, because one line is representing 1 week, market came back to this level. Again, very close to this level. In this week, it couldn't manage to break it. Next week, इससे भी नजदीक गई, almost dead on it. Still couldn't manage to break it. And again, you see 3 consecutive weeks, it kept on selling. So this is a proof that market has accepted this is a significant level. अब आप उसका proof आपको multiple times मिलेंगे. Again, after 2 to 3 months, market came close to this, same reaction. Again, market kept on selling for almost 3 months. Then came back, and by the time इस वक्त कोई से नजदीक भी नहीं आई. Finally, it came now in last 1 month around this area when the market was too bullish. And why? जब ये history develop नहीं हुई थी यहाँ तक, तो आप देखें this line was very important if you draw a trend line that time, because there are multiple concepts going on. Can you imagine how strong this line was? सारी मूव इससे नीचे थी, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ मूविंग एवरेजेस का. फाइनली nobody knew where it will stop, but you see this candle. Now watch the move of this candle. Again, it tested almost same area, couldn't manage to close beyond. What happened? जिस तरह इस वीक की मूव है, इसी तरह देखें कि मार्केट sold in a very bearish manner, और उसकी क्लोजिंग देखे कहाँ आई है. This is the closing point. So you can imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 times same reaction, and we expect the same. It will repeat. Or if you keep this line on your chart, remember this price 1967. जो आप significant level place कर लें, तो उसको आप पेपर पे भी नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Because for example, if this line is deleted somehow, no problem. आपको पता था कि किस किस प्राइस पे था. अगर आपने प्राइस लिखी हुई है तो वो आप इजीली उसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं. Anyway, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी by the time. You don't need to remember. Okay. So अब इस एरिया से मार्केट वापस आई. इसके बाद देखें again it tested same area and this time it managed to close above. अब आप क्लोजिंग प्राइसेस की इंपॉर्टेंस का भी एट द सेम टाइम अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई थी, इसलिए मार्केट बाउंस बैक हो गई, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके, अब यहाँ पे क्लोजिंग वाज स्लाइटली अबव एंड व्हाट दिस वाज वीकली क्लोजिंग. अब उसके बाद कपल ऑफ थिंग्स टू नो. अब आप देखें इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, कोई पढ़ेगा राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? Can somebody read? 1970.86. Okay. अब आप next week, this is what this mean is, because this is almost high. आप इसको कर्सर लेके आए तो आपको prices exact जो है वो भी आ जाएंगे. For example, okay. So yeah, where the cursor is. Second. Actually, it takes certain couple of seconds. और उससे पहले मैं कर्सर मूव कर देता हूँ. इस प्राइस वीक की आप ओपनिंग देखें 1980. What that means? There is a gap of 10 points. यानी कि फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई 70 पे और मंडे मॉर्निंग सिडनी टाइम जब 3 AM मार्केट ओपन हुई है, संडे नाइट को, इन अदर वर्ड्स, so 80 पे ओपन हुई है, 10 point difference. And the single major reason I would say कि the closing was above this significant level or market gap up. This is called gap. There are 5 types of gaps. If you study my other lectures, you will find it there. So this is one of the common gap, weekly gaps. That's why we used to say for the day traders, they should not keep the positions open over the weekend
Okay. And why? Because there might be gaps due to any reason. खैर यहाँ पे वॉर वाली रीजन भी थी, बिकॉज इस वीकेंड पे एक्सपेक्टेड था कि रशिया का और यूक्रेन का कुछ इशू सॉल्व होगा, बट वो इवन सीवियर हो गया। अब उससे क्या हुआ कि अनसर्टनिटी बढ़ी और उससे क्या हुआ कि गोल्ड में शिफ्टिंग हो गई, बट वो शिफ्टिंग ओपनिंग पे कम और इसके बाद ज्यादा नजर आती है जब दोबारा मार्केट मेरा हाई नियर टू दिस लेवल and came back. Okay, let me draw one more line, then we'll go back to the topic. Okay, likewise from upside down, by the way, market is still near to this level, and we still believe if market manage to close above, it again will move up. But for the day, the move is too much already. If you convert it to daily, you can see the market has tested this level again. Even if you come to 30 minutes, you see. Now this is the weekly level, same line, ठीक है? अब आप देखें कि मार्केट कहां से मूव हो रही है. For a couple of days back, because ये 30 मिनट का चार्ट है, 1910. यहाँ से मार्केट ऑल द वे इट्स कमिंग अप 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 अप. फर्स्ट टाइम आके रुकी कहाँ पे है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अगेन इट हैज रिएक्टेड टू दिस लेवल. देयर इज नो मैजिक, देयर इज वेरी सिंपल बेसिक, एंड दिस इज इवन बेस्ड अपॉन 2-3 years. जब आप जस्ट इमेजिन कि आप P6 प्रोडक्ट्स हैं और आप उस पे थॉरोली वर्किंग करके लास्ट 10 year हिस्ट्री पे ऐसे पॉइंट लोकेट करके जब लाइंस लगाएंगे तो इन फ्यूचर वो कितना हेल्पफुल होंगे. अब आफ्टर जनरली व्हेन फर्स्ट टाइम मार्केट टचेस सच लेवल्स, देयर आर 2 scenarios. नंबर 1, इट मैनेज टू क्लोज बियॉन्ड. तो फिर क्या होता है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट. सो दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन एट द सेम टाइम एज वेल, बिकॉज़ मार्केट इज मूविंग अप. तो ये रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं की, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ? अब यहाँ पे 65 से मार्केट जो है वो 58 पे आ गई, which is a decent move for a day trader, because this is almost 7 points, like $700 with 1 unit. Maybe somebody is waiting for this level. He has strong belief and confidence in his technical analysis. He could have, sold 10 contracts. If his account size allows, it's like $7,000 to him, in an hour. So, but such options are rare. Every time you will not find, significant levels. So trades based upon significant levels are high probability trades. Okay, so again back to weekly. Let's look at one more line. See, closing prices are more important to us, and there cannot be 100% exact line, but say line somewhere here. You see this top and the filled bodies of 2 weekly candles, top of filled body of this candle, then you see almost bottom of 4 weeks. ये wicks हैं, tail, these are called wicks or tails. तो ये जो tails हैं, ये almost इस area को touch किया, so made some importance. High of this week, high of this week, so on. Based upon only this less than a year, we found this is important. After that, it managed here as well. आप देखेंगे closing below this line. उसके बाद current week का low is close to this line, and so on. Maybe we use them in addition to other studies, whatever we have been discussing. क्योंकि आप देखें 8 EMA is also near this line. So more reasons, more data, more logics, you will have more confidence in your own trading system.
Okay, I don't want to give too much time to significant levels. Likewise, 60 points out above, 60 points down. Why 60 points? Can anybody tell me? Is 60 points above from the current price and 60 point below from the current price minimum मैंने क्यों कहा था? ATR हमारा 60 है. In weekly, good. Because in weekly charts, ATR is 60, so ideally it should be 60 or more. अब क्या होगा कि by the time if market start moving up or down, तो current price से हम 60 points add करते रहेंगे. Since market is bullish, में भी हम एक आधी line यहाँ पे और evaluate करके will stop and we believe until this bottom is not gonna break. For example, here, so will not go for further. By the way, if we put line here, so instead of here, we'll preferably keep it here. Why? Because again, bottom of these two filled candles, this one, this bottom of candle, this filled candle, this is more important to us. We'll exclude some of the wicks. यहाँ पे भी wicks को exclude किया. ये हमने इसकी base पे लगाई है सिर्फ इतने area पे, और यहाँ पे इसने react किया, यहाँ दोबारा react किया, यहाँ पे भी almost after a month it came back to same level, again bounce. So there is some reaction which we can see. After that, until market, come closer to this one, maybe we don't need to draw lines below this point. Unnecessary time wasted only, because current price is 1965 and this is 1685. It's almost 80 points, fair enough. Or what price action is showing us, कि जब तक ये bottom break नहीं होगा, market is above. Okay. So these are few things. आगे इस अगर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने सारे पॉइंट thoroughly लिखे हैं थर्ड वीडियो में, तो it will be more appropriate. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्विकली? तो in between there are a couple of levels I can see. ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया. Don't think in between there is no level. This you can see so many touches. This top, fill bodies 1, 2, 3, 4, 5 top. 1, 6, 7, 8, 9, 10. So a lot of areas touching. This is also of importance. ये level आप by the way note भी कर सकते हैं. It will help you if somebody is trading gold. Likewise, I can see one level here is also important. Remember, this is in weekly. It's not 5-10 minutes or daily graph. तो जब आप routine में trade करें, for example, when you will convert it to daily, so you will see very few lines left. Now you don't have to change these lines. This is very important. अब आप daily में आप देखें कि it has equally reacted good on daily basis as well. Here you can see. But maybe आप कहें कि नहीं इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ line को, तो don't change this line because it might differ a bit because you initially draw on weekly basis. तो इसको आपने change नहीं करना. Just keep it there. और ये बहुत ज़्यादा आपको लाइंस भी शो नहीं करेगी. दैट्स व्हाई आप उसको अपना लाइट कलर दे दें, डिस्ट्रैक्ट ना करे. एंड इफ यू हैव टू रिमूव सम टाइम, तो आपको लेवल नोट किया हुआ है. अगेन यू कैन चेक व्हेन इट कम्स टू नियर. मे बी सिंस मार्केट इज अप, आप इस लाइन के अलावा बाकी लाइंस रिमूव कर दें. व्हेन मार्केट स्टार्ट मूविंग डाउन, देन यू कैन सी व्हाट वर अदर लेवल्स एंड सो ऑन. ओके, लेट्स गो बैक. सो let's quickly move on. You draw line this, you can see this. We have already studied what are these lines, how to draw. Just quickly overview. Okay. फिर आप gradually इसमें moving averages लगाएंगे, और इसमें ये retracement levels है. I will come to that. And these are very important to explain. And we discussed already what is bullish and what is bearish. I hope all you remember. इसको थोड़ा सा explain मैंने यहाँ पे किया है कि if you compare these two candles or bars, तो जैसे जैसे gradually they are edging higher. Okay, so it's not live anymore.
1 second. Let me. Abhi bhi hai? We'll start. Okay, so welcome back. Slightly bullish because you can see कि यहाँ पे जो इसके highs हैं वो previous highs से थोड़ा सा ऊपर है. Moderately bullish, comparatively more, very bullish, extremely bullish. कि जहाँ पे आप देखें कि जो close थी वही high है और next day उसकी opening is the same and then it never turned back. So these are the different scenarios which you may come across. And it's clear. Likewise, in bearish, you can say in these two candles, the low of this candle is slightly lower than this candle. So that's why we call it slightly bearish. Likewise, moderately bearish, very bearish, and extremely bearish. Extremely bearish means there might be gaps and could be the same prices. Okay. Then market moves in swings as we discussed multiple times. So, second, okay. If somehow you manage to spot out swing high or swing low, so it can give you high probability trades because you can plan selling here near somewhere and with a stop above this swing high, और बाकी आप अपनी स्टडी इस तरह जारी रखेंगे. There could be a line here, it will be break. For example, if you second, let me draw. For example, if this is the situation, तो आपने already यहाँ पे trend line draw की थी. Now here you enter while it's breaking. So at the same time, you can see this is making a swing high as well, based upon these three candles. And then based upon this bearish move, you can sell here with the stop above this point. It's obvious. Any question regarding this? We have discussed it multiple times. Once we enter on trend line breakage, it gives, you know, high probability trades. Likewise, if we manage to spot out, you know, swing low, at the same time, this line is broken. So you can see if you plan to buy here, you have double confidence because this shape confirms this third candle. It confirms this is going to be a rotation zone as well. We call it the rotation zone or swing low. Okay. Sorry, let me erase this. Okay. These are real market moves. ये candles मैंने draw नहीं की, like previously this was animated. इसको हमने ड्रॉ किया हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए. बट जो भी आप इस पूरी प्रेजेंटेशन में कैंडल इस कलर में देखेंगे, ये रियल मार्केट से मैंने कॉपी करके यहाँ पे स्लाइड्स बनाई हुई हैं. Here you can see this is swing low, this is swing low, swing low. Likewise, market is well moving up, but in swings. So here, if we plan to buy, we are ideally looking for the possible swing lows, because if we buy here or here or here with, for example, if we have spot out, okay, this is the swing low, okay. If we buy near any swing low, so stop would be very little. Or जब stop price of PSL value as compared to TP value is less, so what will happen? Your risk reward ratio will be better. Maybe against $200 risk, you are expecting maybe $400 or $600 or $800 profit. Why? Because stop loss, for example, अगर आप यहाँ पे buy करते हैं, suppose, तो आप stop इस point से नीचे दे रहे हैं, तो
आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो आप 8 में बेस कर देते हैं कि until market doesn't break this line plus some other strategies which we cannot put it here right now. ATM is, तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट स्विंग लो से भी आपका स्टॉप हिट नहीं हुआ, then you can gradually move this stop here in profit now and still keep on moving. So in next 3 candles you had excellent move. Maybe you could have liquidated somewhere based upon some other parameters, but this is how it can really help you in high probability trades. Okay. So generally we call it 3-bar confirmation rule. 3 की तो वैसे इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कबूल 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 and so on. So once 3 bars are made, generally there is a possibility of shape like this, whether it is swing low or swing high. So but this is confirmed on this 3rd candle, because this 3rd candle is close above, और इससे ये ट्रेंड रिवर्सल भी शॉर्टर टर्म में स्पॉट होता है, यहाँ पे लाइन भी चेंज होती है, ट्रेंड भी चेंज हो रहा है. इफ इट वाज इन सेलिंग आफ्टर दिस कैंडल इट विल बी इन बाइंग. It's a very small point, but sometimes really helps you a lot in determining whether the swing low or swing high has been made. Now let's see a couple of real examples. Here you can see whenever there is a situation like this, there is some reversal, right? And it gives you like 3, 3, 3, so on. Time to time, in different time frame, you will find situations like this, as I have explained this. हम इसको बाकी मार्केट में भी देखेंगे, बट चूंकि लाइव चार्ट में भी एक कंफर्मेशन हो, एक शेप बन रही है, एक नहीं बन रही, इसलिए मैंने उसमें से ऑलरेडी ये एक्सट्रैक्ट करके बनाई हुई है. बट इन थर्ड एंड लास्ट सेशन विल ओनली बी वर्किंग ऑन रियल ट्रेड्स एंड रियल चार्ट्स, बिकॉज अभी अगर हम एक एक चीज को रियल चार्ट में ढूंढना शुरू कर दें, although you will find lot of situations here, but it will take more time. यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3 it's moving up, then again 1, 2, 3 start moving up, and this is daily. Even if you go to 4 hours, you will have more configuration and swing highs and swing lows. Here you can see this 1, 2, 3 and then moving up, and for the last 12 hours gold is in buying. ठीक है, यहाँ पे और भी रीजन है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है. इफ यू मेक सपोर्ट लाइन तो वो भी ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे significant level से भी bounce हुई है. Multiple concepts, you know, but as you keep on adding knowledge to your brain, it's compiled and you will see necessary use of different parameters. Okay, it's simple. अब आप इसको animated way में I have explained it कि अगर आप line graph के through देखें, तो this is swing low, swing high, so on. And we are looking for ideally swing highs to sell and swing lows to buy, along with our other price action movement and other technical indicators. Obviously, the more reasons you have, of course, more logical you have, it's good and it will give you high probability trades. At the same time, of course, it determines the trend as well. तो उसकी इंटेंसिटी भी आप देख सकते हैं, जैसे भी हमने ग्रेजुअली स्विंग हाइज आर एजिंग हायर, तो डेफिनेटली वी कैन से मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड और एक्सट्रीमली बुलिश, लाइकवाइज बेरिश एंड सो ऑन. सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हियर. ये सारी आपको वीडियो 3 में मिलेंगी. ये मैं उसी की स्लाइड इसीलिए आपको repeat कर रहा हूँ, because you can go back and watch video 3 and you will find it there with the explanation. And here it is explained how the rotation zone is formed gradually. जब multiple swing highs और जब highs
start becoming lows, so then there is possible change in trend. यहाँ पे आप देखें, it was extremely bullish, then it became moderately bullish, then slightly bullish. Why? Because of these highs. यहाँ पे और यहाँ पे हाई का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम हो गया, स्लाइटली हो गया. तो इसके बाद क्या होगा कि मार्केट स्टार्ट मूविंग डाउन, और on the other hand you will find other reasons as well. This support could have been broken. यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी पॉसिबल होगा. तो 3-4 मल्टीपल रीजन यू विल फाइंड, बट ये लोज ब्रेक हुए हैं तो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हुई है ना. सो दिस इज द फोर्थ रीजन. तो जब डे लोज और whatever the time frame is, उनके लोज जो है वो ब्रेक होके नए लो मार्केट बना रही है, तो दिस इंडिकेट्स द रिवर्सल इन ट्रेंड. Hopefully I'm not moving fast. This point is clear. It's very simple. कोई question तो नहीं है so far? No, sir. Likewise, this is a reversal of it. Simply, यहाँ पे आप देखें, this was extremely bearish. This is moderately bearish. क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे लोज को, इस लो का और इस लो का डिफरेंस, और इस लो का और इस लो का डिफरेंस देखें. This is that's why this is slightly bearish because it extended the low, but not in that manner as it was here. यहाँ पे इस लो से काफी नीचे से लो बनाया, यहाँ पे भी एक्सटेंड किया इसने, बट थोड़ा कम किया. इसके बाद आप देखें यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी ब्रेक हुई, और इसके बाद इसने लो ऊपर कर लिया. हायर लोज चेंज को मेंशन कर रहा है कि ये इट्स गोना मेक रोटेशन जोन. अब क्या होगा कि इस लाइन की ब्रेकेज पे अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और स्विंग लो से नीचे स्टॉप लॉस हो आपका, तो मे भी अगर आपने लाइन जहाँ से ड्रॉ की है वही कंफर्मिंग पॉइंट और इनिशिएटिंग पॉइंट कुड बी योर टारगेट्स विद अदर स्टडीज सो ऑन. अच्छा, अब अगर क्या है कि इसके लिए ये हाई ब्रेक होना जरूरी है. प्रीवियस हाई से अगर ऊपर मार्केट नहीं गई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेंशन्ड हियर कि मार्केट बाउंस बैक अगेन समहाउ, एंड इफ इट मैनेज टू ब्रेक दिस लो, मे बी यू कुड हैव स्टॉप्ड आउट, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे आपने बाय किया along with other parameters, but if market start moving down again, don't wait much, और इस लो से नीचे आपका स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ. ये इसने ट्राई किया और उसके बाद इट्स अ फेल ट्राई, और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम हो गया कि ये सिमिलर ट्रेंड है. Likewise, this concept is discussed here कि यहाँ पे मार्केट चेंज इन ट्रेंड हो रही है, और यहाँ पे जब इस स्विंग लो के बाद प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, तो दिस इज द कंफर्मेशन कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ. बट अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे सेम पिक्चर टिल हियर ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट इससे ड्रॉप होगी मार्केट और ये लो ब्रेक हो गया, तो इट मीन it was already in downtrend, so the trend is resumed. It's not reversing. You need little bit practice. It's not difficult because ये studies या analysis नहीं है, ये simple formations हैं. Okay, we have studied this line chart, bar charts, open, high, low, close. First day आपको explain किया था. These are real examples. Color you can change. इसी तरह candlestick we have already discussed. This is the opening and closing, and with respect to previous one, if this is above, तो क्या होगा? Bullish candle होगी. अगर closing is below, then bearish होगी. Such a type, there is a possibility जब opening और closing same हो, एक ही price पे market open हुई, made a high, made a low, and then closed at same price. This is called doji. It generally reversal को mention करता है, but we are not right now discussing the types of candlestick charts. वो basics में नहीं मिलेंगे आपको. Let's cover these things, and then I hope so once you start trading in it and start making money, which gives you
real boost because nothing succeeds like success. So फिर उस motivation के बाद we'll proceed with many other things which will comprise these studies and maybe some other local or global courses and registration inshallah. Okay. Some of the example of candlestick chart. Okay. Whatever chart types we have discussed so far, these were time-based charts. आपको मैंने बताया था first day भी while you were here in the class. These are time-based chart because along with the x-axis we take time and along with the y-axis vertically we take price. But there are other types of charts as well जो कि trade-based हैं, so volume-based हैं, tick-based हैं. For example, US session में this time the market is moving fast. Likewise, for example, if we keep it, say 5 minutes chart, अब आप देखें कि अभी यूएस सेशन की मूव है, but second overnight session में market congestion में आती है अक्सर. Like this period you can see it's not much move, but यहाँ पे आप देखें move हो रहा है. तो यहाँ पे instead of time, especially आप इस एरिया को फोकस करें तो within few points market up and down, तो one can choose कि भाई इस टाइम पे मैंने टाइम बेस्ड चार्ट नहीं देखना, मैं ट्रेड बेस्ड देखता हूँ, वॉल्यूम बेस्ड देखता हूँ और वो कुछ पैरामीटर फिक्स कर सकता है कि ओके फॉर एग्जांपल इन वन कैंडल. एक और भी आपको इसमें बॉटम पे, let me show you here you can see ये वॉल्यूम नजर आ रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम की फिगर्स हो रहा है और यहाँ पे देखें बिल्कुल रिड्यूस वॉल्यूम है. तो अब एट द सेम टाइम आपको ये वॉल्यूम चेंज भी नजर आ रहा है. ये करंट 5 मिनट्स का वॉल्यूम है बिकॉज टाइम इंटरवल इज 5 मिनट्स इन गोल्ड बट वी हैव सिलेक्टेड राइट नाउ. वो कैंडल आगे है here. तो अब ये करंट 5 मिनट्स का वॉल्यूम इधर शो भी हो रहा है और यहाँ भी लिखा आ रहा है 1250 लॉट्स हैज बीन ट्रेडेड. अब आप इसका टाइम फ्रेम अगर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल यू मेक इट 1 आवर, तो आप देखें कि करंट आवर में सो फार 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गोल्ड हैज बीन ट्रेडेड एंड यू नो इट्स इंक्रीजिंग 4521 एंड नाउ यू सी 4530 प्लस 32 सो ऑन. तो जब वो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाई थी तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी मे सिलेक्ट the volume chart and we can fix the value. Whenever there is 1000 lots trade, we want to print one candle of the chart. Let's not go deep into it, but at least you should know. Likewise, tick chart, आप कहते हैं जब 5 tick आएंगी तो एक tick print हो, because ये congestion zone में. I don't want to be, feel distracted कि मैं उसकी एक tick की base पे buy करूँ और उसके बाद market नीचे आए और range bound रहे, तो वो आपको deceive ना कर सके. That's why. तो वो हम ट्रेड बेस्ड चार्ट्स भी समटाइम यूज करते हैं. अब ये टिक चार्ट्स की एग्जांपल है, ये वॉल्यूम चार्ट्स की हैं. अब ये वॉल्यूम चार्ट्स जो नजर आ रहे हैं ये वॉल्यूम बेस्ड प्रिंट्स हो रही हैं कैंडल. इट हैज नथिंग टू डू विद द टाइम. जैसे यहाँ पे 10,000 वॉल्यूम रीच करने पे हमने कहा कि जी एक बार प्रिंट होनी चाहिए whenever the 10,000 contracts have been traded. तो उसके बाद अब वो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मिनट्स में ट्रेड हो या 10 मिनट्स में हो, आफ्टर 10,000 has been traded, next bar will be printed and so on. इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं. We are not discussing it, but just for the sake of familiarity of the terminology, range bar, Kagi charts, Renko charts, line break charts, point and figure charts. Point and figure sometime ज़्यादा यूज होते हैं, बट अभी आप सिर्फ इनके नाम को थोड़ा फेमिलियराइज करें, इनकी फंक्शनैलिटी को फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन सी इन द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक्स ही बताई हैं. जो सेपरेट वीडियोस हैं आई डोंट नो अगर इस बार्स की बनी हुई है तो उसमें ज़्यादा होगा. इसी तरह लाइन ब्रेक्स और जो इनके फीचर्स हैं वो आई डोंट वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट साइड राइट नाउ. बस आपको नाम पता होने चाहिए.
फिर different time frame I have already explained you कि what does weekly, daily, 4 hour and 1 hour or 60 minutes mean. इस time frame से related किसी का कोई question तो नहीं है, कोई confusion? Anyone want to ask anything so far? जी आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी सर। ओके, थोड़ा यार बोल लिया करें, मुझे पता चले, because I cannot see you guys. I don't know who is sleeping and who is not, right? Okay, so time frame done. I think so. There is no confusion. One now 5-minute chart means what is the movement within 5 minutes, or uski opening or closing like this. Okay. Sir, I have a question, sir. Excuse me. Yes, please. So we will be trading on weekly charts. See, this is a very good question. At the same time, very tricky. It cannot be generalized. You know, it depends. It depends on multiple factors. First of all, the account size. Second, objective of trading. आप डे ट्रेड कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, आप पोजीशन ट्रेड कर रहे हैं, आप लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर्स बाय कर रहे हैं, या आप बिटकॉइन बाय कर रहे हैं जिसकी बेस नहीं है. इट कैन बी बॉट टुडे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मे बी एलन मस्क को कोई ख्वाब आए और वो कमेंट दे और अगले दिन वो मार्केट नीचे आ जाए. सो यू कैन नॉट कीप इट लॉन्ग एंड इट डिपेंड्स. तो जनरली ये है कि वीकली या डेली बेसिस पे हम फोरकास्ट करते हैं, और लॉन्गर टर्म प्लान लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज, उनको हम वीकली बेस पे कोई अच्छी लोकेशन देख के लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करते हैं, बिकॉज वी डोंट माइंड इफ इट्स गोइंग अगेंस्ट यू फॉर अ डे और टू, नो प्रॉब्लम. बट आपको यू शुड रिमेंबर, आई टोल्ड यू के ATR वैल्यू से बड़ा आपका स्टॉप होना चाहिए, राइट? ओके. All right, sir. By example, now this is weekly chart of the gold. ATR value क्या है? 60. Okay, एक लॉट के साथ 60 पॉइंट्स कितने डॉलर बनेंगे? आप ही बताएं. 6,000. जी सर. एक with one contract, 60 points of gold means $6,000, correct? Right? जी. अब आपका अकाउंट साइज $5,000 का है. So you cannot trade on weekly charts because you cannot afford even 1 week move, right? So what you will do, कि फिर आप compatible position देखेंगे ना, मतलब आप एक position, for example, if even you could have bought here near this bottom, 20 points within this bottom, but अगर आपका account size 5,000 का है, आपने एक यूनिट बाय किया, तो आप उसको 20 पॉइंट्स भी अवे होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो और उससे पहले रिस्क पर ट्रेड किया 2%. तो यहाँ पे तो 20-30% मूव ऑलरेडी अगेंस्ट हो चुकी होगी ना. तो अब वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट साइज क्या है और जिस प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी एवरेज ATR वैल्यू क्या है, और व्हाट इज योर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. योर प्रॉफिट इज टू मेक मंथली income out of this trading or something else. तो वो ये सारी चीजें, ये I mean जनरल आंसर इसका नहीं हो सकता. Specifically we'll be discussing inshallah when we'll be trading in real funds. Okay, ये how the bars and the time frames are evaluated, ये थोड़ा explain किया गया है. And the thing which I want to let you know, at least in this figure, is if you see this summary, for example, these are different bars. ये 30 minutes की bars हैं, by the way. 9 o'clock, 9:30, 10, 10:30, market की ये move rate, so on. So this is called candlestick math. How we add all the candles, especially the market is in range bounds, तो उसमें हम सबको add कर लेते हैं, simple mathematically. Highest price, lowest price, and then the bearish and the maximum of the bearish
and bullish. इनको सबको ऐड करके अगर कैंडल बनाए तो रिजल्टेंट कैंडल विल लुक लाइक दिस. ये आगे हम बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं. बट दिस इज हाउ यू ऐड इट मैथमेटिकली. Very simple and visually very simple. Okay. Here, look it together. If we have to add this, here we just saw this is the highest point, this is the lowest point, and this is the bearish part, this is the bullish part. But once we add all these, it will be like this. एक ये candle है, this one, this one, this one. For example, if we have to, add these candles, तो हम क्या करेंगे? Highest point लिया, lowest point लिया, ठीक है? अब this is the opening, और इसके बाद जो bearish है और उसकी जो closing है, इन सबको जब add up करेंगे, तो the least closing will subtract simply green with the red. You don't have to do it. It's already there in the system. When it will come to this stage, I'll explain you further, because this has more than 200 slides. अभी हम सिर्फ 50 पे आए हैं unfortunately, और एक function में मैंने जाना था 10 बजे बंद हो जाता है. I'm trying कि हम maximum चीजें आज कर लें. So let's skip for details. Please see video 3. और next एक class हम और रखेंगे इंशाल्लाह इसकी at some appropriate time when most of you are available as well. Okay. कुछ formations जो important हैं एक दो वो mention की है इसमें, क्योंकि candlestick charts की जिस तरह hammer shape ये नजर आ रही है आपको. तो if there is such a situation after consecutive 2 or more bearish candle, if you see candle like this, so this is called hammer, और ये reversal को mention करता है generally. So it means market was bearish, and for the last consecutive candle we see bearish candles. Then suddenly one candle with comparatively larger wick or tail appears with opposite color like this, and the closing is at the day high, right? So this is called hammer, or this is generally reversal one. Then there is shooting star, morning star, a few more terminologies will go later on. Space I have explained you already. Anybody who want to ask anything about space? We discussed already simple color candles, right? यहाँ पे अगर market, for example, we discuss it I think multiple times. Okay, for example, if this is the line, it broke, and if we sell here, then we expect if market goes beyond, so this could be our profit target because same color candles are there. You remember? We studied it already, I think. इससे related questions हुई, space से related, because it gives you high probability trades. Very simple concept, but you will be shockingly surprised to know in Pakistani market nobody knew about space. When I initially start teaching it, बेशुमार exchange members को इसका नहीं पता था, those even who are trading for 20 years and above, because they couldn't get any place to learn it, but it's very, very important. तो ये आपको real examples भी हमने जब trade की थी, आपने देखा था कि जब market, for example, you sell below this line, so this is the profit target. Instead of this initiating point, it's better where the filled body's bottom is. Okay. Likewise, if there is such situation, यहाँ पे अगर आप इसके close above with other multiple things you plan to buy here, so what will happen? Okay, this is the end of space till here, till the end of this red color. यहाँ तक हम अपना profit target रख सकते हैं along with our other stuff, because we expect market will quickly move up to fill this space. Some other examples we can give
One exception, like seeing opposite color. This is still a space, still here, although you can see a candle had a different opposite color there. But if it's more than that, या इसकी tail जो है वो बहुत long है, तो हम उसको भी skip कर देते हैं. But generally, if it's moving in same direction, it's not disturbing this pattern, and there is only one candle in the whole move, so we can count it as a space, but we call it advanced space from this point till this point. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके अभी मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट लेवल्स के लिए जो हम इमोशनल कैंडल्स और लोकेशंस सर्च करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो रियली इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन मैंने किया कि लोकेशन मींस लाइक prior major support or resistance, trend line, channel line, significant level, major moving average break, distance from major moving average, Bollinger Band, pivot lines, anything which is really important and significant, उसको हम count करते हैं for various purposes. इसको explain किया गया. Okay. Began और retracement आपको मैंने नहीं पढ़ाई, वो Fibonacci, GAN and retracement I would try के class में हम करें. Like explained here कि ये previous top था important for us. This was important. Move low, and this is important. Why? Because it's swing low. 3 formation here. 3 formation. Touch it this line, and again this point is important. So on. We locate. When the market is in range bound like this, there are 2 options. It could be a reversal, it could be a continuation. If this resistance line is broke significantly, and even if come back तो वापस channel में नहीं आती, whether with the concept of किस दी trend line good buy or not, यहाँ तो वो भी नहीं है, market वापस आई नहीं है जब इस level से break हुई है, तो ये continuation pattern होगा because previous move was bullish here. अगर ये यहाँ से मैनेज कर लेती सपोर्ट को ब्रेक करना, तो it was reversal instead. इसमें एक चीज और जो हम काउंट करते हैं, that is volume. If the volume is decreased, although the market is going up, so it indicates weakening market. Like here, this is the volume. If you draw the line here, you can clearly see from this point, if you observe, it start moving down, down, down. Only this is little up, then again down till this point. अगर आप इस point से इस point तक watch करें, the volume gradually is coming down. जबकि on the other hand, आप ऊपर candles की situation देखें parallel to this, तो इस candle से इस candle तक, couple of candles before, market was going up. So the prices are going up, the volume is coming down. It means this is not a strengthening market. This is a weakening market, and it can collapse anytime. It is simply looking for some good reason to sell. Like we'll have multiple other reasons also. Maybe the support line is broken here. Okay. And at this point you observed, look, volume is decreased gradually. So it means this is second good reason to sell here. Got my point? You are already planning to sell here based upon this trend line. Maybe you sold it here in this candle, and market start moving up, but your stop was maybe above this point. But you don't need to worry. Why? Because this will give you confidence. I can have a little flexibility because the volume is decreasing gradually and market was going up. This is not in line with the strengthening market. Volume means
ज्यादा लोग इसको बाय सेल नहीं कर रहे अब comparatively compare with the previous candle and the previous candle and the previous candle where the time frame is तो प्राइस भले ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो it can give you confidence to sell here although this support line has already initiated a sell signal but as I told you multiple times more logical reasoning you have it will give you more confidence so ये थोड़ा सा हम exhaustion move को भी इससे define करते हैं कि market exhaust हो रही है okay like this is the real example another real example ये भी real example the previous one यहाँ पे आप देखें continuously market is going up and this is daily chart you can see here daily chart और उसमें यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीज भी नहीं हुआ बट यहाँ से अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम almost from this point you see it's almost same but continuously for so many weeks market keep on moving up so this is 2 week market and finally this was the final line which is broken so इससे पहले कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई ना दिस वाज द फर्स्ट लाइन हियर बट आप इसकी ब्रेकेज पे एंटर प्लान कर रहे थे यू आर वाचिंग द मार्केट केयरफुली कि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है बट ये अभी सेल में कुछ दिनों के लिए आई है बट दिस इज नॉट ब्रोकन देन दिस वाज द नेक्स्ट लाइन valid line because at that point of time there was no price below this line so on all these three were valid line those time but यहाँ पे जब ब्रेक हुई है तो you already had this history कि ये weakening market थी and market is exhausted anyway once we'll start trading and any such situation is there तो आप उसको occasionally you will find such situation and after that you see this is a real move okay so then you know there is a lot of selling okay there are a few more examples ये volume इस दौरान डिक्रीज हो रहा है बट मार्केट ऊपर जा रही थी अब जब यहां से कोलैप्स हुई है तो ये जो प्रीवियस इफेक्ट था इसके वॉल्यूम डिक्रीज होने का वो यहाँ पे ऐड हो गया obviously there will be lot of other factors as well supporting to this thing on balance volume अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा okay volume and open interest इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको initially but let me explain you the difference before that let me see where we should close today's trend lines we have already studied okay ये आपको पढ़ा दिया हुआ already the trend line this is confirming point initiating point first T1 T2 all the valid lines okay piercing bar yes piercing bar आपको पढ़ाना है this is very important concept okay so okay let me give you basic definition that what is open interest commitment and traders report आती है CFTC US से on every weekend commodity futures trading commission being the government regulator of all commodity markets तो वो जब पब्लिश करते हैं तो उसमें ओपन इंटरेस्ट बताते हैं ओपन इंटरेस्ट मीन आउटस्टैंडिंग नेट आउटस्टैंडिंग ओपन ऑर्डर्स इन एनी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 500,000 बाय वॉल्यूम है तो उसमें कुछ बाय कर रहा है कुछ सेल कर रहा है तो ट्रांजैक्शंस मैच हो रही हैं बट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं से 150